নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে জ্ঞানজ্যোতিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুস্তক পল্লৱ ভাগ 1 এই পাঠ্যপুথিখনিৰ অন্তৰ্গত পঞ্চম পাঠ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এই পাঠটোৰ আমি ভালদৰে আলোচনা কৰোঁ আহা। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ। তোমালোক সকলোৱে গোপীনাথ বৰদলৈৰ বিষয়ে নিশ্চয় শুনিছা। আমাৰ অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী। তেওঁৰ বিষয়ে এই পাঠটোত কি আছে তাকে আমি চাওঁ আহা। শাম কা সময় হে বিনু আপনে কমৰে মে बैठी है। গধূলি সময়ত বিনু এগৰাকী ছাত্ৰী, তাই নিজৰ কোঠাত বহি আছে। वो बहुत परेशान है, তাই बहुत चिंतित। उसे असम के किसी महान व्यक्ति पर निबंध लिखना है। उसे असम के किसी एक महान व्यक्ति पर निबंध माने कि এখন ৰচনা লিখিব লাগে। पर वह कुछ लिख नहीं पा रही है, किंतु ताई को लिखिब पड़ा नाय। उसने दीदी विशाखा को अपनी परेशानी बताई। ताइर बाएक विशाखाक निजर परेशानी माने निजर समस्यार विषय कले। विशाखा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताती हूँ। मैं तुम्हाक एजन व्यक्तिर विषय कहूँ हुना। वे महान व्यक्ति है। हे मानुहजन बहुत महान। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ जी। তেওঁ হল लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ। वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। वे माने तेखेते असम के प्रथम मुख्यमंत्री, অসমৰ प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषार हिंदीर তেওঁ हितैषी माने कि शुभचिंतक माने हितचिंतक আছিল। उनका जन्म 6 जून 1890 को नगांव जिले के रहा में हुआ था। তেনেহলে তাৰ পাছত আমি পালো তেখেতৰ জন্মৰ বিষয়ে। তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে নগাঁৱৰ ৰহাত 6 জুনৰ দিনা 1890 চনত। उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदলৈ और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। তাৰ পাছত আমি পালো তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ বিষয়ে। মনত ৰাখিবা, তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল ডক্টৰ বুদ্ধেশ্বৰ বৰদলৈ আৰু মাকৰ নাম আছিল प्राणेश्वरी देवी। उनकी प्राथमिक शिक्षा रहा में प्रारंभ हुई। তেওঁৰ প্ৰথম শিক্ষাটো ক'ত হৈছিলে? ৰহাত। वे एक मेधावी छात्र थे। তেওঁ খুব চোকা ল'ৰা আছিলে। उन्होंने सन 1907 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। তাৰ পাছত পালো তেওঁৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বিষয়ে। তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে 1907 চনৰ গুৱাহাটীৰ কটন কলেজিয়েট স্কুলৰ পৰা। उसके बाद कॉटन कॉलेज से उन्होंने आईए की परीक्षा पास की। তাৰ পাছতে তেখেতে কটন কলেজৰ পৰা আইএ মানে কি হৈছে, সেই সময়ত যোনটো হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা আছিলে, হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষাটো আইএ বুলি কোৱা হৈছিল। তেওঁ আইএ পাছ কৰিলে, তাৰমানে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে। উচ্চ শিক্ষা के लिए वे कोलकाता गए। তাৰ পাছত পঢ়া শুনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কলিকতালৈ গুচি গ'ল। वहाँ से उन्होंने बीए, एमए और वकालत की उपाधियाँ प्राप्त की। আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ কি কৰিলে? বিএ পাছ কৰিলে, এমএ পাছ কৰিলে আৰু উকিল পৰীক্ষাত হৈছে वकालत परीक्षा माने कि তেওঁ पास কৰিলে। बीनू ने पूछा, दीदी बरदলৈ जी की रुचि के बारे में जरा बताइए ना। हाँ, তাই ক'লে যে বৰদলৈ जी যোনটো रुचि, তেওঁ কি কৰি ভাল পাইছিলে তাৰ বিষয়ে কওকচোন। सुनो मैं बताती हूँ। তেতিয়াহ'লে दीदी তাই বাইকে ক'লে যে তেতিয়াহ'লে শুনা, मैं बताती हूँ, मैं कहूँ ना। गोपीनाथ बरदলৈ एक अच्छे गायक और खिलाड़ी थे। गोपीनाथ बरदলৈ এজন খুব ভাল গায়কো আছিলে আৰু লগতে এজন কি খিলাড়ী, তাৰ মানে তেওঁ এজন ভাল খেলুৱৈও আছিল। उनकी रुचि नाटक में भी थी। তেওঁ নাটকো ভাল পাইছিল। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। তেতিয়া সেই সময়তে স্বাধীনতা আন্দোলন হৈছিলে আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ আহ্বানত তেওঁ আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল। কুদ পৰে থে और कई बार माने केइबाबार তেওঁ জেলো যাব লগা হৈছিল। जेल में ही उन्होंने श्री रामचंद्र, बुद्धदेव, हजरत मोहम्मद आदि जीवनी ग्रंथ की रचना की। তেওঁ সেই জেলত থকা সময়তে কি কৰিলে? বুদ্ধদেৱ, হজৰত মোহাম্মদ আদি নামত কেইবাখনো তেখেতলোকৰ জীৱনীও ৰচনা কৰিলে। उनके द्वारा रचित अन्य 2 ग्रंथ हैं महात्मा गांधी और अनासक्ति योग। আৰু লগতে তেওঁ লিখা 2খন গ্ৰন্থৰ নাম হ'ল মহাত্মা গান্ধী আৰু
অনাসক্তি যোগ। এই কিতাপকেইখনৰ নাম লিখি মনত ৰাখিবা তোমালোকে। তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত দুখন কি হ'ল গ্ৰন্থৰ নাম। दीदी आप उनके वैवाहिक और कर्म जीवन के बारे में जानती हैं क्या? তেতিয়া বিনুৱে আকৌ তাইৰ বায়েকক সুধিলে যে আপুনি তেওঁৰ বিবাহিত জীৱন আৰু লগতে তেওঁৰ কৰ্মজীৱনৰ বিষয়ে কিবা জানে নেকি? विशाखा ने कहा। विशाखाए उत्तर दिले, उत्तर गुवाहाटी के भूमिकांत शर्मा मजिंदार बरुआ की कन्या श्रीमती सुरवाला वर्दले से उनकी शादी हुई थी। তেওঁ ক'লে যে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভূমিকান্ত শৰ্মা মজিন্দাৰ বৰুৱা তেওঁৰ কন্যা শ্ৰীমতী সুৰৱালা বৰদলৈক তেওঁ বিয়া কৰাইছিল। वे सादा जीवन और उच्च विचार के थे। তেওঁ খুব সাধাৰণভাৱে আছিল, কিন্তু তেওঁৰ চিন্তাধাৰা বহুত উচ্চ আছিল। वे हमेशा असमवासियों की भलाई के लिए काम करते थे। তেওঁ সদায় অসমবাসীৰ ভালৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছিল। असम की जनता उन्हें बहुत चाहती थी। অসমৰ মানুহবিলাকে তেওঁক খুব ভাল পাইছিলে। इसलिए उन्हें लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। সেইবাবে তেওঁক लोकप्रिय বুলি জনা যায়। दीदी बर्दले जी ने हिंदी के लिए क्या क्या किया था? তাৰ পাছত আকৌ বিনুৱে প্ৰশ্ন কৰিছে বায়েকক যে বৰদলৈজীয়ে হিন্দীৰ কাৰণে কি কি কাম কৰিলে, হিন্দী ভাষাটোৰ কাৰণে। আচ্ছা তো ये भी सुनो। তেতিয়া বিনুৰ বায়েকে ক'লে যে ঠিক আছে, এইটো শুনা। बर्दले जी ने 3 नवंबर 1938 को गुवाहाटी में असम राष्ट्रभाषा प्रसार समिति की स्थापना की थी। মনত ৰাখিবা, বৰদলৈজীয়ে 3 নৱেম্বৰ 1938 চনত তেওঁ কি কৰিছিলে, গুৱাহাটীত অসম ৰাষ্ট্ৰভাষা প্ৰচাৰ সমিতি স্থাপনা কৰিছিলে। वे इस समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। আৰু এই সমিতিৰে প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিলে আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ। এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। उनके प्रयास से सन 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। আৰু তেওঁৰ প্ৰয়াসতে কি হৈছিলে, 1948 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা কৰা হৈছিল। 5 अगस्त 1950 को उनका स्वर्गवास हुआ। আৰু তেওঁৰ দেহাৱসান ঘটিছিলে কেতিয়া, 5 আগষ্ট 1950 চনত। भारत सरकार ने सन 1999 में उन्हें मरणोत्तर भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया। তাৰ পাছতে 1999 চনত মৰণোত্তৰভাৱে মৰাৰ পাছত তেওঁ কি কৰিছিলে, ভাৰত ৰত্ন উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিলে ভাৰত চৰকাৰে। वाह दीदी, आपने बड़े संक्षेप में बर्दले जी का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रकट कर डाला। তেতিয়া বিনুৱে বায়েকক কৈছে যে আপুনি খুব কম শব্দৰ ভিতৰতে কম সময়তে ইমান সুন্দৰকৈ আপুনি বৰদলৈজীৰ গোটেই জীৱনটোৰ বিষয়ে মোক বুজাই দিলে। अब मैं इन पर एक सुंदर निबंध लिख सकती हूँ। এতিয়া মই তেখেতৰ ওপৰত এখন ধুনীয়া ৰচনা লিখিব পাৰিম। तो इस पाठ को आप लोग कोई बार पढ़ें, सुने इस वीडियो को, और गोपीनाथ बरदले जी के बारे में आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और उसने हमारे असम के लिए क्या क्या किया, जिस तरह से उसने राष्ट्रभाषा प्रसार समिति की स्थापना की, गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना की, और साथ साथ इस बात को भी याद रखना कि वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और साथ साथ उनके द्वारा रचित जो दो कुछ जैसे पुस्तकों के बारे में दिए गए हैं, उनके रचनाओं के बारे में दिए गए हैं, उसको भी याद रखना।